लास्ट क्लास एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे थे। एंडोस्पर्म is nutritive tissue which is produced after triple fusion। ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट होता है। एंजियोस्पर्म्स में it is pre-fertilization product in angiosperm, it is pre-fertilization product, hence it is triploid, hence 3n कंडीशन शो करता है क्योंकि ये ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनने वाला पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट होता है। जिम्नोस्पर्म्स में पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट, जिम्नोस्पर्म्स में it is pre-fertilization product, hence it is haploid और n in nature। ये एक स्पेशल फीचर है जो जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म से डिफरेंशिएट करते हैं। ये लास्ट क्लास अपन पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन के बाद डेवलप होते हैं। आज अपन पढ़ेंगे एंडोस्पर्म्स के टाइप के बारे में कि एंडोस्पर्म्स किस तरह के होते हैं। कुछ फैमिलीज में एंडोस्पर्म्स एब्सेंट होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज नो एंडोस्पर्म इन पोडोस्टिमेसी and Orchidaceae family। Orchidaceae family और Podostimaceae में एंडोस्पर्म्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, इस 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में होने वाले डिवीजन के अकॉर्डिंग एंडोस्पर्म को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दिस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज मोस्ट कॉमन टाइप, present in 56% angiospermic families। ये 56% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में आकर करता है। अब इसे न्यूक्लियर टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आकर करते हैं। न्यूक्लियस अंडरगोज डिवीजन बट साइटोप्लाज्म डज नॉट अंडरगो डिवीजन। सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती, इसलिए एम्ब्रियो सैक के अंदर फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। दिस इज एम्ब्रियो सैक। एग सेल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाएगा। यहाँ पर जो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, इट अंडरगोज डिवीजन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती, इसलिए एंडोस्पर्म लिक्विड नेचर वाला होता है। सो व्हाट हैपेंस इन दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस undergoes karyokinesis forming large number of free nuclei, large number of free nuclei, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, हेंस दिस एंडोस्पर्म इज लिक्विड इन नेचर। ये कॉमनली अकर करता है। एग्जाम्पल कोकोनट,
that is Coccus nucifera. कोकोनट में जो वाटर है, दैट वाटर इज लिक्विड एंडोस्पर्म. लेटर इट अंडरगोज साइटोकाइनेसिस एंड फॉर्म्स द सॉलिड एंडोस्पर्म. बट इनिशियली एंडोस्पर्म का नेचर कैसा होगा? लिक्विड नेचर वाले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा. दिस इज फर्स्ट टाइप. सेकेंड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म. It occurs in 25% angiospermic families. सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहा जा रहा है क्योंकि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवीजन के बाद उसमें साइटोकाइनेसिस होती है और सेल्यूलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है. सो प्राइमरी endosperm nucleus undergoes karyokinesis followed by cytokinesis forming solid cellular endosperm. तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगी जिसकी वजह से सॉलिड सेल्यूलर एंडोस्पर्म वाली कंडीशन डेवलप होती है. ये कंडीशन कॉमनली अकर करती है एडोक्सा, मैग्नोलिया, धतूरा जैसे प्लांट्स में. एग्जाम्पल of this type, Edoxa, Magnolia and Dhatura. This is second type of endosperm, that is cellular endosperm. Now third type of endosperm, थर्ड टाइप है एंडोस्पर्म का हेलोबियल एंडोस्पर्म. Observed in 19% angiospermic families. First observed in Helobiaceae family. सबसे पहले हेलोबिएसी फैमिली के मेंबर्स में इसे ऑब्जर्व किया गया था, इसलिए नाम हेलोबियल एंडोस्पर्म रखा गया. इस तरह के एंडोस्पर्म में पार्टली nuclear and partly cellular endosperm is produced. ये मिक्सचर है न्यूक्लियर और सेल्यूलर एंडोस्पर्म का. इसमें पार्टली न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, पार्टली सेल्यूलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है. So what happens in this type of endosperm? This is embryo sac. ये है जाइगोट. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में जो फर्स्ट डिवीजन होता है, दैट फर्स्ट डिवीजन फॉर्म्स अ सेल एंड सेकेंड two cells are produced, a smaller cell and a larger cell. Smaller cell towards callosal end undergoes further division to form cellular endosperm in which cells are linearly organized. Callosal end वाला सेल डिवाइड करके सेल्स बनाएगा जो लीनियर रो में ऑर्गेनाइज्ड होंगे, जबकि माइक्रोपाइलर एंड वाला सेल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन शो करता है इस तरह से. Now this wall degenerates and the entire endosperm fills the central cell. So half of the endosperm is nuclear and half of the endosperm is cellular in nature. इसलिए इसे हेलोबियल एंडोस्पर्म कहा जाता है, which was first observed in members of
हेलोबिएसी फैमिली। माइक्रोपाइलर सेल में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, जबकि कैलोजल सेल में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता, साइटोकाइनेसिस भी आकर करती है। तो ये बेसिक 3 टाइप्स हैं एंडोस्पर्म के। अब इसके अलावा भी एंडोस्पर्म्स के कुछ टाइप्स देखें। दीज आर 3 बेसिक टाइप्स। अदर देन 3 टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स आर आल्सो प्रेजेंट। पहला टाइप है मोजाइक एंडोस्पर्म। मोजाइक एंडोस्पर्म में पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर्स आर ऑब्जर्व। एंडोस्पर्म इज नॉट यूनिफॉर्म। एंडोस्पर्म is not uniform but patches of different colors are observed. Endosperm is not uniform but patches of different colors are observed. इसका कॉमन एग्जाम्पल जिया मेज में एंडोस्पर्म इज ऑफ 2 कलर, 2 कलर के पैचेस होते हैं, येलो पैचेस एंड व्हाइट पैचेस आर ऑब्जर्व। जिया मेज में एंडोस्पर्म पैची होता है, कुछ पोर्शन येलोइश कलर का, कुछ पोर्शन व्हाइटिश कलर का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के वक्त व्हाट एक्चुअली हैपेंस, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एम्ब्रियो सैक में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे और एक मेल गैमेट आएगा जो n होगा। नॉर्मली व्हाट हैपेंस, ये दोनों फ्यूज होकर 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। Now sometimes what happens, इनका फ्यूजन नहीं होगा, diploid cell, this diploid secondary nucleus divides to form diploid endosperm and haploid male gamete divides to form haploid endosperm. इसलिए patches observe किए जाते हैं। So write down, in maize patches of 2 different colors are observed. Patches of 2 different colors are observed. Weber suggested that such condition is due to failure of second male gamete to fuse with secondary nucleus, failure of second male gamete to fuse with secondary nucleus. Secondary nucleus divides to form diploid endosperm and second male gamete forms haploid endosperm. Second male gamete forms haploid endosperm. Such endosperm is partly starchy and partly sugary in nature. Partly starchy and partly sugary in nature. तो इस तरह का एंडोस्पर्म मेनली किस में पाया जाता है, जिया मेज में ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है जो एंडोस्पर्म का, ruminate endosperm. Second type is ruminate endosperm. इस केस में एंडोस्पर्म is not uniform. Endosperm is not uniform, but it consists of ridges and furrows, but it consists of ridges and furrows. यानी
एंडोस्पर्म यूनिफॉर्म नेचर वाला नहीं होगा, इसमें इस तरह से रिजेस और फरोज ऑब्जर्व की जाएंगे. दीज पार्ट्स आर रिजेस and these depressions are furrows. Such endosperms are observed in, such endosperm is observed in 32 angiospermic families. Like Apocynaceae, Rubiaceae, इस तरह के एंडोस्पर्म्स 32 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में ऑब्जर्व किए जाते हैं, जैसे एपोसाइनेसी, रूबिएसी, एनोनेसी, पामेसी. ये कुछ और इंपॉर्टेंट फैमिलीज है. यहाँ पर क्या याद रखना है, रूमिनेट एंडोस्पर्म क्या है, पामेसी, एनोनेसी. इनमें ये कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है. सो ये दो और स्पेशल टाइप है एंडोस्पर्म के. वन इज रूमिनेट एंडोस्पर्म, अनदर वन इज मोजाइक एंडोस्पर्म. अब एंडोस्पर्म से कुछ और टर्म्स भी रिलेटेड है जनरली जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे जीनिया, मेटाजीनिया. तो नेक्स्ट टर्म इज जीनिया. इन टर्म्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. बेसिकली व्हाट इज द टर्म, किसने प्रपोज किया था ये टर्म. फर्स्ट टर्म इज जीनिया, टर्म proposed by Fock. It refers to effect of pollen grain on endosperm. जो क्वेश्चन पूछा गया वो यही है, व्हाट इज जीनिया, इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन एंडोस्पर्म. टर्म किसने प्रपोज किया था, फॉक ने. दूसरा सिमिलर टर्म मेटाजीनिया, टर्म प्रपोज्ड बाय स्विंगल. It is effect of pollen grain on tissue outside embryo sac. So metagynia is effect of pollen grain on tissue outside embryo sac. Next term is elurone layer. Next term is elurone layer. मोनोकॉट्स में स्पेशली पोएसी फैमिली के मेंबर्स में एंडोस्पर्म की आउटर मोस्ट लेयर स्पेशलाइज्ड होकर लेयर बनाती है जिसे एल्यूरोन लेयर कहा जाता है. इस एल्यूरोन लेयर में ग्लोबॉइड प्रोटीनेशियस बॉडीज प्रेजेंट होती हैं. दे आर रिच इन एंजाइम्स. ये एल्यूरोन लेयर के एंजाइम्स एंडोस्पर्म में प्रेजेंट स्टोर्ड फूड को हाइड्रोलाइज करते हैं और एंडोस्पर्म तक पहुंचाते हैं. इस स्पेशल लेयर को एल्यूरोन लेयर कहा जाता है. सो राइट डाउन, इन members of Poaceae family, outermost layer of endosperm becomes specialized forming elurone layer.
cells of this layer contains globoid proteinaceous bodies rich in enzymes. This enzyme causes hydrolysis of stored food of endosperm during germination. So it causes hydrolysis of stored food of endosperm during germination. So एल्यूरोन लेयर के सेल्स किस तरह के होंगे? ट्रिप्लॉइड होंगे. Cells of aileron layers are generally triploid in nature. So next term is scutellum. मोनोकॉट्स में स्पेशली पोएसी फैमिली के मेंबर्स में जो कॉटिलिडन होता है, सिंगल कॉटिलिडन इज देयर, दैट इज वेरी मच रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर and present in between embryonal axis and endosperm in a diagonal manner. This reduced cotyledon is referred to as scutellum. So reduced single cotyledon of Poaceae family is known as scutellum. इसे कॉमनली क्या कहा जाता है? स्क्यूटेलम कहा जाता है. ठीक है. सो ये सारे टर्म्स हैं. यहाँ पर अपन ने टर्म एंडोस्पर्म के टाइप पढ़े. 3 बेसिक टाइप, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म. इसके अलावा 2 और स्पेशल टाइप, रूमिनेट एंडोस्पर्म एंड मोजाइक एंडोस्पर्म, एंड टर्म्स लाइक जीनिया, metagynia, aileron layer and scutellum. Okay, so this is how fertilization occurs. Fertilization के बाद जाइगोट में डिविजन होगा और जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा. This